इसको नमस्कार, गपशप जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज अ पेरेंटिंग गाइड एंड टॉक्स अ लॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, and I am amazed by her energy. Actually, she is a software engineer running a household with two boys, और multinational company में she is working for last more than a decade. और उसके अलावा भी she does lots of work, and she says like she does blogging, she does anchoring, and she does all these things to find out, or I can say, is her purpose of life or life of purpose. So welcome Abhrekha to this episode. Abhrekha, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पाई, पर मैं चाहूंगी तुम बताओ अपने बारे सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। सो जैसे आपने कहा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक मल्टीनेशनल में ओवर अ डिकेड नहीं, ऑलमोस्ट अब 2 डिकेड्स हो जाएंगे दैट आई बीन वर्किंग, में। ओके। एंड सो 17 years टू बी प्रिसाइज। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। मतलब माय फादर वाज इन आर्मी, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रहे। देयर वाज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, देयर वाज सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड पीपल। तो बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखी अलग अलग जगह पे रह के, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके। तो वो सब काम आया, और थोड़ा सा हार्ड वर्क और परसिवरेंस और फोकस था। तो इसके चलते आई एम एबल टू बैलेंस बोथ माय फैमिली, माय वर्क एंड माय हॉबीज। सो दिस इज इट। पर इतना टाइम कहाँ से एक दिन में निकाल पाते हो आप लोग? मतलब ये जो आप लोगों की जनरेशन है, आई एम ऑलवेज इन ऑ विद द काइंड ऑफ यू मैनेज थिंग्स, एंड इतना कुछ इंटरेस्ट के साथ करना, ये बहुत ही मतलब इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट एवरीवेयर। नहीं, हमने आप लोगों से ही सीखा है। मतलब आई सीन माय मदर वर्किंग रियली हार्ड एंड बैलेंसिंग। और उस वक्त तो इतना ऑटोमेशन भी नहीं होता था, इतना डोमेस्टिक हेल्प सपोर्ट नहीं होता था, इतने डिश वॉशर्स या रोबोट्स नहीं होते थे, सो वो आप लोगों से ही हमने सीखा जो रियल हार्ड वर्क होता है। और बाकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड जैसे कि एक सर्कस में जगलर होता है, उसके हाथ में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, राइट? बट कभी कुछ कुछ बॉल्स ऊपर हवा में होती है और कभी कुछ हाथ में। तो सिमिलरली I can only talk about myself. So that is how I prioritize. So sometimes my children become my priority, sometimes my office become my priority, sometimes my hobbies become my priority. So it all depends, and thoda sa proactively I try to manage, so that my quality doesn't deteriorate in any of the fields. And so I may not be the best, but I try best in my capacity to do things. And obviously बहुत गलतियां होती हैं. This is how you grow, this is how you learn. राइट। But गलतियां, काम जो करता है उसी से गलतियां होती है, हाँ, जो काम नहीं एक्चुअली करता वो ये गलती बहुत बड़ी चीज है कि जो काम नहीं तो करता वो गलती करेगा ही नहीं, काम करने तो वालों से। बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। एंड आई थिंक हर गलती से कुछ ना कुछ सीखने को ठीक मिलता है। दैट चाहिए, इज हाउ यस। यू इवॉल्व एंड गेट राइट। इन्वॉल्व इन फर्दर थिंग्स, एंड देन यू चूज जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड दैट इज हाउ आई कंटिन्यू। अच्छा, एक since you people, I mean, we will not talk about the generation. I would specifically talk about you कि आप इतना सब करते हैं तो आप बिजी रहती हैं बहुत ज्यादा। तो अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं टाइम के हिसाब से, क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम। सो ये कैसे आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, या मतलब quality time, since I'm sure you are giving quality time to your children, so is it enough or quantity was better? I mean, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि ये कैसे क्या बेटर है। देखिए, कहना मुश्किल है कि क्या बेटर है। एज एम सेइंग कि हम साथ में रह के भी आजकल, मतलब एक कमरे में बैठ के भी एक दूसरे को अगर व्हाट्सएप करें, अपने मोबाइल पे लगे रहे हैं, सब लोग अपने अपने गैजेट्स पे लगे रहे हैं, तो वो साथ रह के भी साथ रहना नहीं होता है। बशर्ते पहले जैसे हमारे बचपन में हम लोग साथ में बैठ के ताश खेल लिया करते थे या कोई बोर्ड गेम खेल लेते थे। अभी इफ यू सी लाइफ टाइम ऑफ एनी गेम, इफ यू गिव टू अ चाइल्ड, वो 5 मिनट में 10 मिनट में बोर हो जाएगा, नो मैटर कितना। एंड देन दिल स्विच बैक टू अ टैबलेट और अ मोबाइल। सो when you say about quality quantity, yes, because as you rightly mentioned, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है बिकॉज ऑफ वर्क एंड हाउस होल्ड कोर्स, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। बट आई ट्राई टू गिव कि जितना भी टाइम है आई एम विद देम, एंड आई ट्राई टू अवॉइड टचिंग माई मोबाइल ड्यूरिंग दैट टाइम और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एज मच एज आई कैन, सो दैट जितना भी टाइम है इट इज मेमोरेबल, एंड दैट इज हाउ आई क्रिएट मेमोरीज एंड ट्राई टू बी विद देम।
अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस की क्या आपकी, आई मीन, एक्सपीरियंस की लर्निंग्स हैं which I would like you to share with listeners? वर्क लाइफ बैलेंस, आई मीन सी एज एम सेइंग ईच वन टू देयर ओन, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां और रेजिलियंस होता है, तरीका होता है हर चीज को हैंडल करने का. सो वन टिप व्हिच आई विल गिव, सो इट्स नॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स अबाउट बैलेंस इन योर लाइफ ओवरऑल. तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो अपने लिए हर हर रोज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें. देखिए सबके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है. तो और एक बात तो मैंने जो ऑब्जर्व करी है, एंड इवन विद माय एक्सपीरियंस, कि जो चीज आपको पसंद है ना, आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेंगे. बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स हैं मेरी, या बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ, उनको जैसे बुक्स पढ़ने का शौक है तो दे विल फिनिश द बुक्स, दे विल रीड द बुक्स. या किसी को कोई सीरीज देखने का शौक है, सो यू जो आपको पसंद है ना, आप उसके लिए हमेशा टाइम निकाल ही लेते हैं, Right. राइट. तो सिमिलरली जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, या एज आई एम सेइंग ओवरऑल बैलेंस, तो मेंटल बैलेंस इज आल्सो देयर, फिजिकल बैलेंस इज आल्सो देयर. तो अपने लिए हमेशा थोड़ा सा टाइम निकालिए, कुछ कोई हॉबी को जरूर परस्यू कीजिए, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, और चाहे वो म्यूजिक हो. और अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए. आई जैसे पर्सनली लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स एंड ऑल दोस, एंड समटाइम्स मेडिटेट एज वेल. सो इस तरह से आप कीजिए. और हो सकता है कुछ दिन, इफ योर किड इज नॉट कीपिंग वेल, या ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, तो दोज डेज यू वोंट बी एबल टू डू, विच इज ओके. सो दैट इज हाउ. सो एज आई वाज सेइंग कि कभी कुछ कुछ ज्यादा प्रायोरिटाइज हो जाता है, सो लेट्स फोकस दैट. सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, एंड देयर शुडंट बी एनी गिल्ट और रिग्रेट इन योर लाइफ एट ऑल. बिकॉज एज आई एम सेइंग कि जो भी आप गलतियां करते हैं उनसे भी आप सीखते ही हैं. सो जस्ट डोंट फील गिल्टी, बिकॉज आई ऑफन सीन जो working mothers है, they feel really guilty कि they're not spending much time with the family or kids. But it's okay, because if you are happy, then only you can keep your family happy. And if your work is making you happy, then please continue, and whatever little time you have, you can spend with your family then. So it see basically it all depends कि आपको किस में happiness मिलती है और किस में खुशी मिलती है. क्योंकि अगर आप खुश हैं तभी आप खुशियां स्प्रेड कर सकते हैं, राइट. नहीं तो आप दुखी रहेंगे तो फिर इट विल बी प्रॉब्लम फॉर योर फैमिली. सो जो भी चीज आपको खुशी दे, फिर चाहे वो कोई हॉबी परस्यू करना है, चाहे वो अच्छा खाना बनाना है, या बाहर जाके काम करना है, आप खुश रहिए और अपनी फैमिली को खुश रखिए. अच्छा, राइटिंग, ब्लॉगिंग का, व्हेन डिड दिस जर्नी स्टार्ट? मैंने कुछ भी कभी प्लान नहीं करा. नीदर आई एम अ फॉर्मली ट्रेन्ड राइटर और ब्लॉगर एज सच, बट ओवर द टाइम, मतलब बचपन से आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग, एंड फॉर मी राइटिंग वाज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इट वाज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी इन अ वे, कि जब भी मैं दुखी होती थी, आई यूज्ड टू राइट. आई यूज्ड टू फील लो, आई यूज्ड टू राइट. आई यूज्ड टू फील हैप्पी, आई यूज्ड टू राइट. तो बहुत शौक था मुझे लिखने का. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड राइटिंग लिटिल बिट आर्टिकल्स ऑन पेरेंटिंग एंड मदरहुड. तो लोगों को बहुत अच्छे लगे, एंड दे सेड कि दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड दे कुड रिलेट टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली हम लोग कभी डे केयर नहीं गए, बट आई हैड टू सेंड माय, बिकॉज वी स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट. सो नो elderly staying with us, so I had to send my children to daycare to be able to continue with my job. So I remember because हम लोग कभी नहीं गए, so there were many women, even today they come to me and ask that how was it, and should we do this, is good or bad. So I always tell there's nothing right and wrong. Every parent wishes good only for the child. It's all Right. sometimes circumstances and just matter of time. So you need to be strong enough. You need not be an emotional mother ki, because I also remember some days jab, I couldn't take a leave, and husband also has to go to office, and then I'll send with medicine, I'll send the child to the daycare. So you need to be a strong mother, a strong woman. And as I'm saying, you need to think what you're doing. You need to be alert and aware of things around you. So I think you know exactly. So these kind of experiences, I started writing, and I started writing that how these days daycares are not daycare, they're more of activity centers. And so there shouldn't be any mother guilt, because घर पे रहो, and then you are frustrated, and you are not good with your child. आप गुस्से में हैं, आप बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं. So it's better आप काम पे जाएं, और खुशी खुशी जब वापस आए तो you spend that evening with your child in a happy mood. So that kind of thing. So I started writing on those. तो लोग रिलेट करने लगे. काफी लेडीज, काफी young mothers, they used to come to me and ask. So then this is how actually it started. I just started writing my own experiences, and people started relating to it, and that is how it all started. अच्छा, बट लाइक योर सन्स, उन्होंने जैसे तुम्हें काम करते हुए देखा, तो बच्चे भी, दे फील प्राउड एक्चुअली व्हेन देयर मदर्स आर वर्किंग.
I'll say क्योंकि proud also because हाँ, उन्हें they're अच्छा very लगता है। happy हाँ नहीं obviously they're very happy because वो कहते हैं जब हम हमारा नाम गूगल करते हैं तो आपकी फोटोज ज्यादा आ जाती हैं तो हाँ आई डोंट नो वो प्राउड फील करते हैं या वियर्ड फील हाँ करते हैं बट यस डेफिनेटली आई थिंक दे अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत बचपन में ही मैंने उनको बता दिया था कि द वे यू आर इम्पोर्टेंट टू मी माई ड्रीम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट सो दे ऑलवेज सपोर्ट दे नो कि मम्मी अगर ऑफिस के कॉल्स पे है या इस तरह से कोई शोज या शूट्स हैं तो यू नो दिल बी quiet, they'll be silent, and they'll ओके support. So this is how they grow. They've grown with me, and without their support, definitely it हाँ won't have जैसे been possible. और कोई इंटरेस्टिंग बात तुम्हारी इसी जर्नी में, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसमें कोई इंस्टेंसेस की कभी, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज इंपॉर्टेंट हो, देयर कैन बी टू थिंग्स इंपॉर्टेंट, देन हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स? और Uh, हाँ so one thing I'll definitely call out see देखिए it is practically impossible कि मैं ही हर बार छुट्टी लूं when kids are unwell या मैं ही हर बार उनका sports day annual day attend करूं while I would want as a mother so here it becomes utmost important of taking help from your spouse or taking help from your in-laws so as women as we women इसमें कहीं मतलब अगर and forget about कभी ऐसा important है अगर मुझे कुछ दिन बाहर ही जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ कोई सोलो ट्रिप पे भी जाना है I think you should not feel bad because I mean you have the right to be happy you have the right to enjoy life you also have राइट, one life it doesn't mean that if you are a woman you are a mother you're only meant to wash clothes and always be working no you can sit you can enjoy you can browse your mobile you can do whatever you want you can do whatever makes you happy you have that right so जो आप वर्क लाइफ बैलेंस का बोल रहे हैं या ओवरऑल बैलेंस इन द लाइफ इज दैट योर व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी सो husbands should also and these days obviously like my husband is very supportive and I often see these days things are changing तो ऐसा नहीं है ऐसी a lot of husbands cooking food and taking care of children while the wife is out and all those things so I think this is very important कि you ask help from your relatives ask help from your friends ask help from your spouse and try to be happy don't try to make things complex and so if you ask help you have to be vocal about it देखिए राइट, अपने आप शेर के मुंह में हिरन नहीं आता right so हाँ it's बिल्कुल, simple it's as simple as that तो अगर आपको जरूरत है तो just voice और seek help and इसमें don't feel guilty about it and definitely you'll get those helping hands which will help you stay happy, motivated, and focus on your things. सो एज सच, अदर देन योर फैमिली, व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम? Um, so, uh, support system, as I'm saying, family is the biggest support. हाँ, Whenever I need, husband is there. Otherwise, I said initially when kids were very young, I used to send them to daycare. So आजकल बहुत सारे avenues हैं you can have a domestic help at your home you can install those cameras just to check and then you have these daycares and activity centers so I was very happy that from looking at my child's development there was no guilt sending them to daycare they evolved nice they became independent and they valued see it's very important क्या होता है कि even children they start taking for granted कि parents तो राइट, हमेशा रहेंगे so when they see कि नहीं यार even parents are busy and they are taking out time and taking that effort to be with them so eventually they also start valuing that time and yeah and understanding better and yes, becoming and actually independent this gives them an opportunity to be independent. वो अकेले होते हैं तो then they correct can correct manage things, they learn very correct fast, है ना? definitely हाँ, yes अच्छा, और तुम लिखने के अलावा और जॉब और होम मैनेजमेंट के अलावा व्हाट एल्स डू यू डू? बिकॉज तुम्हारा मैंने पढ़ा था यू आर बिजी इन टू मेनी थिंग्स, सो आई वुड लाइक यू टू, आई मीन, टेल अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. so I won't say busy I'll say I'm happily motivated Yes, doing a lot yes, of happily things motivated, no yes doubt yeah about yeah it. That is why you are so able to do so much, na? करेक्ट 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 Yeah. क्योंकि मैं उसको एज अ वर्क नहीं लेती एंड एज आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ मतलब फॉर एनी अपॉर्चुनिटी विच कम सो I sing also I paint also but if you ask me I address a lot of parenting in women forums I try to help women in my capacity apart from that as I'm saying recently I wrote something on mental health and so I continue my passion of writing with help of
blogging. I write articles in some good magazines, in couple stories in and Millisimal and all those, Face Mag, some big magazines where Chetan Bhagat was on cover and all those. So, and recently in one October issue for Millisimal, I was also on the cover. So what I'm saying, it's a beautiful journey, and I've really got beautiful people to support me and help me. So. Writing hai, then I really love doing anchoring. I hosted a couple of good shows, some virtual shows, some in-person shows. So I love talking to people, interacting. That gives me a lot of happiness, and I just forget everything. So as I'm saying, so whatever comes my way, creating small videos, reels, giving shout outs to small business and helping people in my capacity, I just love doing that. So whichever way I can, all those things. So I keep doing little things to stay happy and motivated, not to prove anything to the world, but to myself that, I can be happy and there is no reason for me to be sad. You are basically a people's person. I mean, Kind of, yes. I love talking to people. Yes. अच्छा, लिखने का जहां तक सवाल है ना, अभिरेखा, मुझे ऐसा लगता है, देखो, नॉन फिक्शन तो आप थोड़ा टाइम निकाल के लिख सकते हो, बट सिंस यू सेड यू हैव रिटन इवन स्टोरीज, फिक्शन लिखने के लिए यू नीड टाइम टू इमेजिन थिंग्स एंड ऑल, वो लिखना इतने बिजी शेड्यूल में, मतलब सच थिंग्स रियली, मैं समझ नहीं पाती, बिकॉज आई एम अ नॉन फिक्शन राइटर। तो मुझे, Mm-hmm. मैं वैसे ही आई एम इन ऑ ऑफ द पीपल हु राइट फिक्शन, और स्टोरीज वगैरह लिखना, इसमें कैसे, मतलब ये चीज कैसे करते हो तुम? So to be honest, आप आइडियाज सही कह रहे कैसे हैं कि आते हैं? हाँ, नहीं नहीं, you're absolutely correct. मतलब in fact, fiction I also don't write much, but yes, I have tried my hand there as well, because even if you have to, send some message of some women empowerment or say gender equality, whatever I've written, so I try to curate a story and then put that message. So you're right. It takes a lot of time. You हम्म, really need to be at peace while you're writing, and then you keep thinking that how beautifully you can give that social message as well as create that story. So I've written for Story Mirror and all that, wherein I have written how, I've taken names, and that how women have inspired me, or what was my journey, or all those things. So a social message I've tried to give with help of stories. So yes, I do think, and one thought relates to other, a thread connects to another, and like that it happens. अच्छा, तुम इतना बाहर तुम्हारा इंटरेक्शन रहता है, जेंडर इक्वालिटी का क्या सीन है आजकल? मतलब um चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में? बहुत बहुत आई थिंक हर जगह ही है, एंड मैं रिसेंटली आई वाज सो हैप्पी, 2 days बैक आई हैड गॉन फॉर अ हाउस वार्मिंग. ओके, नाउ द इनवाइट, इसी आइडियली जब भी हमेशा इनवाइट आता है, इट्स ऑलवेज हस्बैंड्स नेम, राइट, कि मिस्टर एबीसी हैज इनवाइटेड यू. आई वाज सो अमेज्ड टू सी द इनवाइट सेड मिसेस XYZ and family invites you for their house warming. And I had gone there and I really congratulated not only her but her husband, saying that seldom we have such husbands, because see, ultimately, so when you say equality, but I was just so happy, and I mean, I read that invite multiple times because it gave me immense happiness that how this landscape is changing, because matlab, I had never seen that before, so for me that change was really good. And husband welcoming and supporting wife more than her and keeping his ego aside, it was a very good example. And it just happened 2 days back, and I was really happy. So definitely things are changing slowly, gradually at everywhere. But obviously I don't know of to call it 100% done. It's a process and it इट्स will अ take प्रोसेस, time, इट्स but अ प्रोसेस। but as I'm saying, I see spouses supporting their husbands supporting their wives to go out and do. They don't hesitate cooking, they don't hesitate doing babysitting and all those things. And they have understood that conventional thing which you used to say कि नहीं, औरत ही बच्चे को संभाले या माँ ही संभाले. So I think definitely that is changing, even at workplaces, in offices also. जितना एक शायद मदर को वर्क फ्रॉम होम चाहिए छोटे बच्चे के लिए, वर्क प्लेसेस भी समझती हैं कि नहीं, इवन मैन दे कैन हैव एलिंग पेरेंट्स या उनको प्रॉब्लम है, सो दे आल्सो गेट. सो जो पहले मतलब आप मतलब सोचते थे कि नहीं, कुछ राइट्स या कुछ चीजें सिर्फ औरतों के लिए ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. आई थिंक एवरीबडी नीड्स इट. थिंग्स आर चेंजिंग। So things are definitely changing and people are at least aware.
कि and I think that kind of wisdom also even in schools I think I see my children wherein kahin pe bhi if there's any derogatory remark even if a boy makes on a girl or a girl makes on a boy, both are equally punished. So I think that has otherwise usually it is like a boy would be usually caught and punished, but no, even if so that kind of things I'm seeing. तो बचपन से ही if your children are taught, students are taught this in school, that we have to respect, forget about gender equality, we can have LGBTs, we can have like all the people. God has made everyone beautiful, okay, that's one thing. Right. So forget about gender or forget about skin color. That's what I tell my children, that God has made everyone beautiful and we have to respect irrespective of they come to work at our place, or they are principal or your teacher or your friend or younger to you. You need to respect and love just everyone. अभिरेखा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे आज बात करके। एक्चुअली आई ऑलवेज वांट टू टॉक टू यंगर पीपल बिकॉज आप लोगों के थ्रू हमें जो सोशल चेंजेस हैं वो ज्यादा पता लगते हैं। बिकॉज एक तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो यंगर लोगों के साथ बहुत कम होता है, एंड यू पीपल आर बेसिकली एक्चुअली द चेंज मेकर्स। तो इसलिए एज मुझे ए सेड, आप लोगों से सीखा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप ही लोगों से सीखा है। सो आई थिंक एंड आई एम श्योर हमारी नेक्स्ट जनरेशन विल बी बेटर देन अस, सो आई exactly, थिंक दिस exactly. दिस इज हाउ इट हैपेंस। It is just like, I mean, that is why every generation is always ahead of the older generation. ये हमेशा होता है। हम लोग अपने पेरेंट्स से करेक्ट आगे थे, तुम लोग हमसे आगे, और नेक्स्ट तुम्हारे करेक्ट जो आगे करेक्ट बच्चे हैं वो आगे होंगे, और that is how society actually करेक्ट दैट इज हाउ grows. वी इवॉल्व। हाँ, वही तो कह रही Yes. हूँ, कुछ चीजें अच्छे के लिए, कुछ हाँ बुरे के लिए, बट हाँ वी हैव टू बी ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू आवर रूट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एक्चुअली दिस इज वन मेजर थिंग। और मेरा अभी जो लास्ट में ना अभी एपिसोड हुआ उसमें वी स्पोक अबाउट रिस्पेक्टिंग पीपल हु आर विजिबली डिफरेंट। और ये चीजें हम्म। अब चीजें आ रही हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं एक्चुअली। इन चीजों के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। करेक्ट करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हाँ। आप जो भी आप बात करते हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी, बिल्कुल आपने सही बोला। एज आई एम सेइंग, नॉट ओनली वर्क प्लेसेस और ऑफिसेज में एलजीबीटीज को भी वेलकम किया जाता है एज नॉर्मल, और पीपल विद डिसेबिलिटीज को भी दे वेलकम, और दे क्रिएट सच रोल्स इस तरह से कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले और एकदम हम्म। इक्वली ट्रीट किया जाए। तो बहुत बहुत अच्छी बात है हाँ, कि ये इंक्लूसिव मतलब सोसाइटी जो होती है इस इंक्लूसिव है, और हाँ, हाँ। इंक्लूजन डाइवर्सिटी हाँ। बहुत 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 हद तक, और काफी एक अच्छा चेंज है ये। Thank you so much, Abhirekar, for being on the show, and I wish you a great luck, और ऐसे ही तुम अच्छे काम करती रहो और bring good change to the society. Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।